For two events A and B, P of B is 0.3, P of A but not B. So P of पहले तो हम लोग लिख लेंगे क्या क्या दिया है उन्होंने. Let us write down what is given. P of B is 0.3. P of A but not B. A intersection B complement. मतलब म्हणजे काय फक्त A. Only A. Only A is 0.4. P of only A is 0.4 and P of not A complement is 0.6. Now, if P of A complement is 0.6, what is P of A? It will be 0.4. अब देखो, P of only A is equal to P of A. P of only A is equal to P of A, and it makes the event mutually exclusive. When only A, probability of only occurrence of A is equal to probability of occurrence of A, then they are mutually exclusive. कुछ दिन पहले ही मैंने ये बात करी थी, आपको अगर याद होगा तो. सिर्फ A होने की probability, if it is equal to occurrence of only A, then A and B are mutually exclusive. They do not intersect each other. Then next sum, 9th किसी के लिए था, हाँ 9th हो गया, अभी 15th. 10th में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 11th में? No ma'am. 12th? Yes ma'am. 13th? 12th one. 12th one you have a problem. Okay. For two independent event A and B, what is probability of A plus B? A plus B is union. You should always understand. A plus B is union. Now, if they are independent events, it is not compulsory that independent are mutually exclusive. So what is A intersection B? It is P of A into P of B. तो ये क्या होगा? 3/5 into 2/5, 2/3. So A intersection B will be 2/5. What do we want? We want A plus B. A plus B is also P of A union B. ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो लोग ऐसे दे देते हैं. तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ A union B? P of A plus P of B minus P of A intersection B. now P of A का है 3/5 plus P of B का है 2/3 minus A intersection B का है 2/5. 3/5 minus 2/5, 1/5. 1/5 plus 2/3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार आपण. 3 plus 10 divided by 15. Your answer will be 13/15. Do you have that answer? Yes ma'am. Yes. अब यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन क्यों निकाला वो मैं बोलती हूँ. उन्होंने देते वक्त बोला है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आपको A यूनियन B निकालना है.
तो जरूरी तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमेशा ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो इंटरसेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाला। हाँ, अगर कुछ दिया नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, इसका मतलब वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसा कंसिडर करना पड़ता है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं देंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है या नहीं वो भी दे देंगे। अगर उन्होंने सिर्फ इंडिपेंडेंट बोला है तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ऐसा ही पकड़ के चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसिडर दैट दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो वो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करते। और देखो, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो ए यूनियन बी होता पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो 3/5 प्लस 2/3, 3/5 क्या हुआ, 3/5 प्लस 2/3 क्या होगा, 9 प्लस 10, 19/15 है क्या आंसर, नहीं है। और 19/15 तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं आ सकती अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। अगर इफ दे आर इंडिपेंडेंट एंड इफ दे ट्रीट दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इट विल बी p of a plus b will only be 3/5 plus 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 19/15। 19/15 प्रोबेबिलिटी इज 1 point something which is not acceptable। तो ये भी आप करके देख सकते हैं, या उसको आसान तरीका यही है कि अगर उन्होंने बोला ही नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, तो आप उसको ट्रीट नहीं करोगे कि दैट इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। You will not assume that it is mutually exclusive. When nothing is mentioned, you will assume that it is not mutually exclusive. Am I making some sense? Yes, ma'am. चलो, उसके बाद कौन सा 15th वाला करना है। तो 12th आ गया क्या, ये क्या है, हाँ ये 12th है, ये 13th है, तो 13th आ गया। No, ma'am. बताओ वो टीचिंग में क्या था? P of A is P and P of B is Q. Then P of A by B is less than or equal to P by Q. लेस देन और इक्वल टू, ये तो दोनों सेम ही दिए उन्होंने। इसका आंसर नन ऑफ दिस है क्या 13th का? It is a property basically, but it is also equal to A या B, ये दोनों सेम ही दिए उन्होंने, तो A या B हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर P of A, probability of A and probability of B is given, then probability of occurrence of A when B has already occurred is always less than the ratio of P of A upon P of B. A is the answer. 14th में कोई प्रॉब्लम है? मैम वो इंटर कॉम्प्लीमेंट है, वो जो ऊपर ऐसे किया है बार। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने दिया है P of A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नथिंग बट P of A intersection B bracket complement as per De Morgan's law. This is pi by 6. So what is P of A intersection B? 1 minus pi by 6, that is 1 by 6. P of A क्या है? It is 1 by 2. What is P of B? टू बाई थ्री। P of B कॉम्प्लीमेंट 2/3 है, तो P of B तो 1/3 होगा ना। A यूनियन B कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/3।
माइनस 1/6, तो वो होगा 3 + 2/6 माइनस 1/6, 5/6 minus 1/6. It is 4/6. 4/6 is 2/3. है आपके पास आंसर? Now 15. If for two independent event A and B, now again they have mentioned independent event. So we don't know whether they are mutually exclusive or not. P of A union B is 2/3. P of A is 2/5. What is P of B? P of A union B is 2/3. P of A is 2/5. And you want to find out P of B. Now we will not assume that it is that they are mutually exclusive. We will assume that they are not mutually exclusive. So P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. But A intersection B will be, so it is P of A plus P of B minus P of A into P of B. कारण ते इंडिपेंडेंट आहेत. मग आता A युनियन B काय 2/3 is equals to P of A काय 2/5, P of B काय माहितीच नाहीये. P of A काय 2/5 into P of B. It is 2/3 is equals to 2/5 plus P of B into 1 minus 2/5. 1 minus 2/5 काय येतं? 3/5 येतं. मग 2/3 minus 2/5. हे काय होईल 10 minus 6 म्हणजे 4/15 is equals to P of B 3/5. हा 5 तिकडे, हे तिकडे जाऊन रेसिप्रोकल होऊन जाईल. So you will get 4 into 5 upon 15 into 3. So it will be 4/9. So P of B is 4/9. आहे का आंसर? Yes.
Now they are saying P of A is 2 by 3, P of B is 3 by 4, P of A by B. A by B means probability of occurrence of A when B has already occurred is 2 by 3. If, now see this is theoretical, okay. P of A is 2 by 3. P of A by B is also 2 by 3. It means A and B are independent. Current probability of occurrence of A is equal to probability of occurrence of A when B has already occurred. A ची probability इंडिव्हिज्युअल पण तीच आहे आणि बी झाल्यानंतरची पण probability तीच आहे. असं जर असेल तर A आणि B हे इंडिपेंडंट असतात. मग P of B काय असेल? P of B by A काय असेल? That is equal to P of B, that is 3 by 4 because they are independent. नंतर काय होतं अडलेलं सम 19. मैम 17 भी बताओ. Okay. P of A is A, P of B is B, P of A intersection B is C. Then the expression P of A complement union B complement in terms of A, B and C is. What do you mean by P of A complement union B complement? By De Morgan's law, P of A complement union, sorry, intersection B complement is equal to P of A union B bracket complement. आपण काय करू पहिले P of A union B शोधून काढू. तो काय येतो P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A plus P of B minus P of A intersection B. तो वो तो है A plus B minus C. A plus B minus C. पण आपल्याला याचा कॉम्प्लिमेंट काढायचा आहे. त्याचा कॉम्प्लिमेंट कसा येईल? P of A union B ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट कसा येईल? 1 minus P of A union B. हे 1 minus A plus B minus C. वन माइनस A माइनस B प्लस C. आहे का आन्सर बघा. D is your answer. P of A union B bracket complement is equals to 1 minus P of A union B. So that is equal to 1 minus A minus B plus C. एटीन्थ में कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम. For 3 events A, B and C, the probability that only A occurs and B and C do not occur. ये वाला हो जाएगा. 19. It is given that a family of 2 children has a girl. What is the probability that the other child is also a girl? It is 0.5. कारण गर्ल होण्याची प्रोबॅबिलिटी 0.5 असते. पहिली जर समजा मुलगी असेल तर दुसरी मुलगी असण्याची प्रोबॅबिलिटी काय आहे?
0.5 आहे. पहिल्या मुलीवर दूसरी मुलगी डिपेंडेंट होत नहीं ना. ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि अगर पहली लड़की है तो दूसरी लड़की होगी या अफेक्ट होगा. नहीं, पहले बच्चे के जेंडर पे दूसरे बच्चे का जेंडर डिसाइड नहीं होता है, तो इसलिए वो 0.5 ही होगा. देन नेक्स्ट, अभी 19 हो गया, 23. 20 भी देख लेते हैं, थोड़ा अलग लग रहा है. 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability that the second coin would show a tail given that the first coin has already shown a head? This is conditional. 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability that second coin would show a tail? Now, what is the probability that the first coin will show head? It is 1/2. What is the probability that the second coin will show tail? It is 1/2. त्यांनी काय म्हटलंय की what is the probability that the second coin would show a tail given that the first coin has shown head? आता अशी किती केसेस आहेत जिकडे पहिला कॉइन हेड दाखवतो आणि दुसरा कॉइन टेल दाखवतो. 2 कॉइन एकत्र टॉस केल्यानंतर काय काय होऊ शकतं? हेड हेड येईल, टेल टेल येईल, टेल हेड येईल, हेड टेल येईल. आता पहिला कॉइन हेड आणि दुसरा कॉइन टेल दाखवणार, याची प्रोबॅबिलिटी काय? 1/4. पहिल्या कॉइननी हेड दाखवण्याची प्रोबॅबिलिटी काय? 1/2. ते होईल काय? 2/4. that is 1/2. 0.5. Are we getting this? Okay, if no one is answering, it means you are getting it. If a random variable x assumes the value 0, 1, 2 with probability 0.3, 0.5, 0.2, find its expected value. So 0 into 0.3 is 0. 1 into 0.5, 0.5. 2 into 0.2, so it will be 0 plus 0.5 plus 2 into 0.2, 0.4. So your answer is 0.9. Alak answer? Yes, C is your answer. 22. If two random variable x and y are related such that y is equals to minus 3x plus 4, the standard deviation of x is 2, then find the standard deviation of y. आता हे प्रोबॅबिलिटी मध्ये करण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. y is equals to minus 3x plus 4. Standard deviation of x is 2. That's what they are saying. तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो वरायंस क्या होगा x का? 4, because variance is square of standard deviation. And now you want variance of y. Variance of y, or I will say variance of minus 3x plus 4 is equal to minus 3 चा square into variance of x. कारण तेच तर प्रॉपर्टी आहे, कालच लिहून दिली मी. variance of ax plus b
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू वरांस ऑफ एक्स। कल ही लिख के दिया ना ये मैंने। यस मैम। ये क्या हो गया, ये हो गया 9 इंटू वरांस ऑफ एक्स क्या है 4। आपका आंसर क्या आया 36। ये तो वरांस आ गया अभी y का। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसका, अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विल बी पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ वरांस, दैट इज 6। है क्या आंसर, देखो। यस यस मैम। आंसर। Similarly here 2x plus 3y plus 4 is equals to 0. Variance of x is 6. Find variance of y. 2x plus 3y plus 4 they have said. 2x plus 3y is equals to 4 का प्लस 4 है, प्लस 4 म्हणजे इज इक्वल्स टू मायनस 4 येईल ते. नेक्स्ट सम इज 2x plus 3y is equals to minus 4. Now I will first write it down as y is equals to something. So it will be 3y is equals to 2x minus 2x minus 4. Y is equals to minus 2 by 3 x minus 4 by 3. Now what is variance of x? 6. You want to find out variance of y. Now variance of y is nothing but variance of minus 2 by 3x minus 4 by 3, that is equal to minus 2 by 3 चा square into variance of x. minus 2 by 3 चा square काय येणार आहे 4 by 9. variance of x काय येणार आहे 6. 4 into 6 काय येणार 24 by 9. That has to be your variance of y. 24 by 9 is 8 by 3. 8 by 3 आणि 24 by 9 सेम आलं ना. So 23rd का आंसर क्या है A. हो गया, सेट बी सॉल्व हो गया हम लोगों का. यस मैम. अभी कल हम लोग सेट सी सॉल्व करेंगे.